We are here again with the comparison combination and comparison view. Hopefully you will understand if you watch our previous comparison lecture. This is the comparison lecture part 2, which is on topic on the continuous tense. Comparison means that we want to make a minor changes and just you have remind one continuous tense, then you are able to change it into the future, past and the present continuous tense. Let's start the lecture. Hopefully you will remember my name and our page. Now we will move to the our topic, present continuous tense. Present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Like used in the flowchart formula, I have already told you that continuous form will depend upon the first form plus ing plus helping verbs. In present continuous tense, the helping verbs are or auxiliary verbs are. The helping verbs are is, am, are in the present, and in past was, were, and in future will, shall, being is an helping verb for the continuous tense for future. Let us discuss and focus on the our first part, which is present continuous tense. Their structure formula is subject plus is, am, are plus first form plus ing plus object. दिस फार्मूला इज़ फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में मुस्बत जुमला भी कहा जाता है. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड सेंटेंस विच मे आल्सो नाउन बाय मनफी जुमला इन उर्दू एंड इन इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ing will be added, then the form will be become continuous form. If we want to make an interrogative sentence, the same as usual formula for other helping verb will become out, and subject plus first form plus ing plus subject and question mark. Question mark is an important part of the interrogative sentence. I can say that if your name is not known, then your identity is unknown to describe. If question mark is not apply in the interrogative sentence, then the interrogative sentence have no importance. उर्दू में कहने का मतलब ये है कि मेरे भाइयों गल सुनो, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ मतलब ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता या ना ही नहीं पता तो ਤੁਹਾਡੀ की पहचान होएगी. समझ लो इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला सवालिया निशान जिहड़ा है सवालिया जुमले की पहचान है. ठीक है मेरे भाई, याद रखनी है गल. तो ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ. ਹੈਲਪਿੰਗ वर्ब ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ. ठीक है, चलो भाई अगे टुरने आ. इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सब्जेक्ट. दिस फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. सम केस आर दैट कम the question and the negative condition will also asked. If we want to make y sentences, then the same formula y will add it to the third formula, then it will become to the fifth sentence. We have to remember the points which are very important in the present continuous tense. Present continuous tense, my dear friend, I am going to tell you this point. He, she, it and the singular nouns, the helping verb will apply is. Is used with the he, she, it and singular noun. Am is used with the I. We, they, you have helping verb which is are. और मेरे भाई उर्दू में बताता चलूँ, ही, शी, इट और वाहिद इसमों के साथ इज़ और आई के साथ एम, वी, दे, यू के साथ आर इस्तेमाल होगा. कंटिन्यूस फॉर्म आएगी मेरे भाई. एग्जांपल में देखते चलें. अब बारिश हो रही है. देयर ट्रांसलेशन विल बी इट इज़ रेनिंग नाउ. इट इज़ रेनिंग नाउ, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. सब्जेक्ट इज़ नॉट रेनिंग, कंटिन्यूस फॉर्म नाउ. Now is the time, not an object. My friend, you will say that
There is no object. I will tell you the truth of this thing in our next lecture. You have to watch and wait for it. There is a lot of thing which is described and tell us by you. So wait and see. This is the whole formula of present continuous tense. Now we will move to the past continuous tense. Next topic is past continuous tense. I will tell you minor changes and you will able to translate or change present continuous into past continuous tense. Just my dear friend, you have to remember was were will be used as helping verb in the past tense. The whole formula is same. Subject plus first form plus ing plus object. Subject plus first form plus ing plus object. Was were used as helping verb. Was were used as helping verb. My dear friend, just remember was were used as helping verb in the past tense, which is past continuous tense. Point of remembrance is that ही शी इट और वाहिद इसमों के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ वाज इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम प्रोनाउंस और सिंगल नाउन और प्लूरल नाउन्स के साथ वर इस्तेमाल होगा. द एग्जाम्पल इज दैट शी वॉज डूइंग होम व्हेन गेस्ट अराइव. शी वॉज डूइंग होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव. वो अपना घर का काम कर रही थी जब के मेहमान आए. फर्स्ट इज द कंटिन्यूस टेंस which is past continuous tense. The other part is, hopefully you remember our previous lecture, it is second form, then it will be past indefinite tense. My dear friend, just little and minor changes occur, then you will be able to make a comparison and complete detail of the sentences. Now our next and final stop of comparison in continuous tense is future continuous tense. Structure formula is subject, will be, shall be. I have already told you that will, shall used as helping verb in the future tense. Being used, be used in continuous form. The whole formula is continuous for continuous is same. So my dear friend, if you want to make a negative sentence of the future continuous tense, then subject will, shall be, not first form plus ing object. And same as usual for the interrogative case, will, shall plus subject plus being plus first form plus ing plus subject. And sign of interrogation will also apply. Now you can say that Babaji will remind and again says the old thing कि सवालिया निशान के बगैर इंटरोगेटिव की पहचान नहीं है. तो भाई मेरे याद रखना है ये, ठीक है. बाबा जी की गल याद रखनी है, ठीक है. चलें भाई आगे चलते हैं. विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट. सेम एज यूजुअल फार्मूला फॉर अदर जस्ट हेल्पिंग वर्ब आर चेंज. पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस, याद रखने के लिए पॉइंट जो होते हैं भाई मेरे वो आपने माइंड में रखने हैं. सेम एज़ यूजुअल उसके लिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि आई, वी, आई के साथ शैल इस्तेमाल होगा, वी के साथ भी शैल इस्तेमाल होगा और ही, शी, इट के साथ विल इस्तेमाल होगा और सिंगुलर नाउन के साथ भी विल इस्तेमाल होगा. अगर किसी बात का पुख्ता इरादा होगा तो चेंजिंग हो सकती है. आई विल, मैं पक्का इरादा करता हूँ, जहाँ पर मुस्बत पता हो कि मैं ये काम करने वाला हूँ, उसके साथ फिर चेंजिंग ऑफ वर्ब अकर होगी. तो इसकी एग्जांपल देते हैं भाई. मैं उस वक्त अखबार पढ़ रहा हूँगा. मैं उस वक्त अखबार पढ़ रहा हूँगा. आई शैल बीइंग रीडिंग द न्यूज़ पेपर देन. देन इज़ यूज फॉर टाइम. द पेपर विच इज़ द न्यूज़ पेपर एंड बीइंग रीडिंग shall be is an helping verb, reading. So my dear friend, reading, what is meant by reading in this sentence? Hopefully you are able to tell us
Reading is an strong verb. And I is, what is I in the sentence? I is, my dear friend, subject. This is the comparison and little adjustment of the comparison lecture formulas. My dear friend, I am telling you again and again these things. If something is ignored by us, then you can tell us by your previous comment and rear comments. Then will try our best to clear the concept of your. Stay blessed, stay safe, do exercise daily, and eat apple and banana daily. Stay safe, happy journey, and happy life.